मैम लोग क्या रूपाली मैम मैडम लेफ्ट का पकड़ मैम दिस कैमरा लुक किया देखिए मैडम कधीपासून बोलतो मला फोटो काढायचा मैम वेट मत करने आ रहा और मैं सामने आई हूँ मेट्रोपॉलिस का थैंक यू मैम लुक किया मैम हॉस्पिटल में मैम होल्ड ऑन उनका बंदा था मैम राइट साइड थैंक यू कुणी म्हटलं कुणी आवाज दिला अच्छा इथे बोलायचं आहे अच्छा कोण विचारणार आहे मला काही मला कोण प्रश्न विचारणार आहे अच्छा हां बेगे पार्डन क्या बोला पूछा आपने what am I expecting tonight? I'm expecting a lot of entertainment, lot of meaningful awards, and lot of entertainment because I come from the entertainment industry and I'm here to get entertained today. And Radio Mirchi Awards have come a long way and I have been attending it right from the first Radio Mirchi Award. Of course, in between I could not attend it. For last 4 years I think I didn't attend. So I'm very happy that after this COVID thing, this is a nice atmosphere. I love music and music, who doesn't love music? But I also sing, so I am looking forward to this evening. But should I sing a Konkani song or a Marathi song or a Hindi song? जब चली ठंडी हवा जब उठी काली घटा मुझको ए जाने वफा तुम याद आए. Thank you so much. This is, by the way, this is my father-in-law song, late Ravi. So this is one of his songs, He has given lots of good music. So this is one of his songs, which I love. Thank you so much. Namaskar. Oh, मी
मजेत आहे. आपण कसे आहात? उत्तम. छान छान मस्त. तुम्हाला बघून नेहमी प्रसन्न वाटतं. ते मी तर म्हटलं ना, ते म्हणाले की तिकडे तुम्हाला बोलवलं. म्हटलं नाही, त्यांच्या इंटरव्ह्यूमध्ये मी डिस्कस करणार नाही. मला त्यांचं गाणं ऐकून म्हणून नाही इन्सिस्टंट अच्छा. गाणं म्हणून सो नाईस ऑफ यू. बऱ्यात नाही हो मजेत. तू कसं आहेस? मस्त. आता आहे काय आता तुझंच हे आहे ना. नाही अँकरिंग नाही ॲक्ट. अच्छा ॲक्ट आहे. सो आय सी यू देअर. येस येस. या अशी बघत जाईल. प्रत्येक कॅमेऱ्यात बघितलं. ओके थँक्यू. हे हॅलो कसे आहात तुम्ही? अच्छा. रिहर्सल मी कविता ताईची बघितली होती कारण तुमची झूमवरची रिहर्सल. फन अँड आय गेस खूप सारी गाणी ऐकायला मिळतील आज. सगळेच जण आम्ही मिरची म्युझिक अवॉर्डची वाट बघत असतो वर्षभर, कारण म्युझिकसाठी डेडिकेटेड असं चॅनल्स होता. म्हणजे मिरचीवरती गाणीसुद्धा खूप सुंदर सिलेक्ट केली जातात, खूप चांगली गाणीही वाजवली जातात आणि मिरची म्युझिक अवॉर्ड्समध्ये सो ते त्या डिपार्टमेंटसाठी जास्त आहे. सो मजा येणार आहे. परफॉर्मन्सेस आय गेस अमृतासुद्धा परफॉर्म करते आहे. लुकिंग फॉरवर्ड टू हर परफॉर्मन्स आणि या मजा येते. काय नहीं, आज मैं शायद अवार्ड देने वाली हूँ. आई एम नॉट परफॉर्मिंग. आई थिंक आई विल प्रेजेंट वन ऑफ द अवार्ड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एक्चुअली जो भी गाना सुनने में अच्छा लगे वो सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं. सो देर इज़ नो स्पेसिफिक कैटेगरी विच आई लाइक. Anything and everything which is soothing, which has melody, which is written properly, beautifully, because कई कबार words are not chosen properly. I feel कि ऐसे ही लिख देते हैं. But fortunately we have so many great poets in Marathi. वैभव जोशी है, गुरु ठाकूर है, हे सगळेजण लिहितात तर त्यांचं कुठलंही गाणं ऐकायला मजा येते. नो, आई एम 60s and 70s फैन मोस्टली, क्योंकि उस ज़माने में जो चीज़ें लिखी जाती थी वैसी आजकल नहीं सुनने को मिलती है. सो आई थिंक मैं थोड़ी गलत ज़माने में पैदा हुई हूँ. 60s में आती तो और अच्छा लगता था मुझे. Actually, recently I directed one film which is Mana Fakira, and Siddharth Mahadevan has sung the song Mana Fakira. So the title song is my most favorite song. It's my caller tune also. So जरा से भेटलो, जरा से बोललो, तरी हे मन फिरे तुझ्याच भोवती. जवळ असूनही तहान लागते, हवीशी वाटते सतत मिठी तुझी. मन फकीरा हो 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 हो,
आय थिंक सिद्धू असता तर तो खूप जास्त चांगलं गायला असता, कारण त्यांनी कंपोज केलेलं आणि त्यांनी गायलेलं गाणं. थँक्यू. Okay. Hello, hi guys. What am I expecting tonight? I'm expecting a lot of my friends, obviously, will be getting awards. I'm here to support them all, and I love them all. I'm just looking forward. I'm not sure who's going to be getting the awards, but I'm sure it's going to be a great evening. I'm looking forward towards it. I am, well, unfortunately, I'm not performing this time. I'm a guest here and probably would be presenting an award if possible. And yes, I'm here to support my friends. And as much as our films or other awards are important for us, Radio Mirchi Awards is one of the most important awards in the music industry, and it is one of the award functions that I never miss out. We always look forward to every year, and again this time I'm looking forward towards this award function. I love music. Actually, ये तो सवाल ही कैसा सवाल रहा ये तो. I think everybody loves music. Music is therapy. It's form of expression. It's everything. I think music नहीं हुआ तो फिर अगर हमारी लाइफ में म्यूजिक नहीं रहा तो फिर it will be like life कितना सूखा सूखा लगेगा. It was so boring. I mean, I can't imagine something like that. Yeah, absolutely. वही बात हो रही थी वहाँ पे कि मैं ना लिरिक्स ज़्यादा याद नहीं रख पाती हूँ और लेकिन हाँ एक ऑल टाइम फेवरेट बट मेरी आवाज़ बहुत ही ख़राब है बट एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट बिकॉज यही थोड़ी बहुत वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम चाहे ना चाहे ज़माना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. Oh, thank you. That's really, I don't know. ठीक ठाक चल जाता है types. All right, thank you so much. हाँ जी. क्यों? हाँ जी. कैसे हैं आप? नमस्कार मैं हूँ स्मिता गोंदकर सामने दे नमस्कार मैं हूँ स्मिता गोंदकर. मेरे सारे दोस्तों को और सारे फैंस के लिए होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. मला डायरेक्ट
करू नको रे, काय करायचं ते मी करतो. हां पडलं तर प्रॉब्लेम होईल. 2-2 मार्क्स घेऊन जावा नाही रे, जावा काय. थँक्यू. बोला. Lot of fun. I'm expecting lot of fun, lot of thrill, lot of excitement, and lot of energy, with lot of musical people around, and the atmosphere being so musical, always as Military Awards has always been. Sorry. एक शाबाशी है जो आपकी पीठ पे पड़ती है, और हर कलाकार के लिए वो शाबाशी बहुत ज़रूरी होती है. कभी वो ऑडियंस की तरफ से होती है, कभी फैमिली की तरफ से होती है, और कभी एक इदारे की तरफ से होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है. जैसे आज मिर्ची अवार्ड्स ने तय किया है कि वो कुछ लोगों की पीठ थपथपाएंगे और उनका प्रोत्साहन करेंगे. जी नहीं, आज मैं परफॉर्मेंस देखने आया हूँ और अवार्ड्स लेते हुए मेरे दोस्तों को, डिजर्विंग लोगों को देखने के लिए आया हूँ. वेल, होली के लिए सबसे बेहतर चीज़ इस साल की ऐसी होगी कि वो होली के जो रंग होंगे, या वो गुलाल हो या जो भी हो, वो घर में अपने जो कृष्ण कन्हैया की जो मूर्ति है उसी को लगाएं और घर के बाहर ना निकलें. अभी गा चुका हूँ मैं. थैंक यू वेरी मच.